पॉडकास्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है बिकॉज ये पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है विद वंडर लेडी जिज्ञासा गुप्ता। इन्होंने अपने अर्ली 30s में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर हैंडल किए, बहुत सारे ताने सुने बिकॉज ऑफ हर ओवरवेट एंड टुडे शी हेल्प्स पीपल टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फैट टू फिट। इसके साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड गोल्ड मेडल जीता। प्लस शी इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रो चैम्प इन इंडिया एज वेल एज इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ये पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। इन्होंने बताया है कि आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स खाने चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके लिए अच्छे होते हैं, क्या आपके लिए अच्छा नहीं होता टू लीड अ बेटर एंड अ हेल्थियर लाइफ। सो आई अर्ज all of you to watch this podcast till the end. आज का एपिसोड एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एपिसोड होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले ऑन हेल्थ, डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो आज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, प्लीज एक पेन, बुक, पेपर साथ में लेके बैठो ताकि आप नोट्स बना सको एंड वो नोट्स से आप सीख सको कि आप आपकी हेल्थ लाइफ कैसे बेटर कर सकते हो। जो आज के हमारे गेस्ट है जिज्ञासा मैम, एक बहुत ही ज्यादा रेनाउंड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रह चुके हैं। सो वेलकम टू द शो मैम। So thank you so much, Mana, for inviting me to your podcast show. Your studio is absolutely beautiful. Thank you so much for capturing my fitness journey. I feel really blessed. Starting with what got me into fitness and how long I have been in fitness. 4th June 1999 is the first day when I had gone for the exercise. And before that, trust me, I would just do जो सड़क वाले जो games होते हैं. Of course, I've been brought into that. I was born into that era wherein we'll play more of the outdoor games, unlike in today's world, how kids would play. So from then, I have been into exercises. And thereafter, I've done my engineering and masters and the traditional way of working into like a white collar job is what people say. So I've been into banking. I have been in Jaipur till 2013, and then is when I moved to Pune. When I moved to Pune, when I landed, I was approximately 100 kgs. Approximately. How did I reach this 100? Though I had started my journey in 1999, was, of course, you move into corporate, there's a lot of pressure. You have like 14 hours, 16 hours of work hours. So diet goes for a toss completely. And then when you go new into, making money, you're so excited about eating pizzas and burgers and, some of the chaat and going out with the friends that you kind of underestimate your own health. And by the time I realized, for me, it was already 10 months in the organization and I was detected with hypothyroid. Right. So it was way back in 2006. From then, the medication went on and we'll talk about it in detail. So within a span of few months, the medication went up from 25 mg to 150 mg. So from 2007, I've been on 150 mg of medication. And that's how, I had a bit of guidance, but not to as much as, how I have evolved in the past few years. And not a great balance into the lifestyle. सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करने से वेट नहीं कम होता. जो बाकी के जितना टाइम है हमारे लाइफ में, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, हमारा स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, those are the things which actually makes a bigger difference. Everything has its own values. So 2013 I came here and I was on a heavy medication. 2014 the medication was out, new shoes were in, the first branded shoes of my life. 2014 I reduced about 45 kgs every single day. Okay, and from then, I not only moved from just walking properly or walking from my house to my pickup point because I was still working to corporate. I started running marathons. I started with 10 and then eventually I have done half marathons. And then
I went into cycling and then duathlons. And then with this, I always did the strength training because the strength to be able to perform any activity should not reduce. So strength training means I'll go for my workouts, proper weightlifting. I've done kickboxing. I would ensure that I will do my yoga, which was only thought as stretching and breathing exercises, but it's beyond that. And then I think in 2021, we had gone for a bodybuilding competition to Goa. And my coach was sitting next to me and I was driving to Goa. And I asked him, do you think I can do this as well? And then he says, yeah, why not? You're already strong. And I think that one line changed my perception towards, you can do much more in life. It's about testing your own capabilities. So with that, 2022 is when I did my first bodybuilding competition in Goa with ICN. I won the first female bodybuilding athlete in the sports category. Thereafter, it gave me another opportunity to go onto the international platform. And trust me, Manav, when I moved from banking to fitness industry, it was scary, right? Because that was my main domain. So talk about finances, talk about recognition. You already had a stable life. And then moving from that stable life to a discomfort, a new arena of life is actually like taking risk, but you got to do what you got to believe in. And 2017, I moved into fitness. And a lot of people in the family were concerned because they loved me and they were like, would you be able to mark our name? Would you be able to make a name with already existing so many people in the fitness industry? And I was like, why not? Why not? If you're passionate about something, if you believe, if you manifest, this word for me is quite huge. You can technically do anything in life, And come to think of it, that people ask me, how do you happen to win what you do? My only advice to those people is, whatever you are doing, do your homework properly. So right from, why are you doing this, to what is needed to do this particular task, to what all things are required, right? From exactly A to Z, and then go deep down there and understand, what do you need to work upon? And then you need to have, the best of the teachers to be able to guide you through. And you have to research, you have to read, you have to understand. So it's not just about restricting, that I have a competition and I just go and perform. It's about doing your research and develop accordingly. So this is how I have been able to represent India. It's been a tough thing, but yes, I still get goosebumps when I think about the day that I won the trophy, and I'm here and I've got an opportunity that you are interviewing me, Manav. So मैम, अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई है. So I would like to break this down. And अभी आपने जब फिटनेस इंडस्ट्री में आए, डाइट की इंडस्ट्री में आए, तो आपने उसके लिए क्या क्या पढ़ाई की है, आपने कैसे वो स्टार्ट किया, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो? Right. So 2017 is when I decided, before I turned 40, I need to live my passion. And that is when, while I was working on my grace period of moving out of the operations background, I had about 3 to 4 months that I had to, work on my parallel world. And I would always say a parallel world. So your corporate industry and your fitness industry, because I didn't want to wait, So parallelly, I was studying. So I did a lot of courses because I wanted to be like a life coach for people, one-stop shop for everything that they'd come. I learned functional training courses. I did a personal training course. These 2 courses I did from FASA. Then I did nutrition and fitness course, which I did from INFS. I also did my teacher's training course in yoga because,
everything, like I said, has to be a part of it. And I was also working on my fitness levels as well, because if you're in the game after 3 months of this parallel world of corporate and fitness, people need to see you there. So learning, evolving on yourself, and then to be able to get it to the masses is what I was working for the next 3 months. And I was also taking the classes and training people at the same time, so that I'm not absolutely new when I come out of the fitness industry, and I still have a mark. So sleep took a bit of a toll, but yes, I was so enthusiastic that those learning and development is important manner, whether we are working in any industry. तो पढ़ाई करना जरूरी है, सीखना हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें एज देखना है या मुझे बहुत आ गया या मुझे इतना पढ़ लिया है तो आगे नहीं पढ़ना है. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. तो वो पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करके आई वॉज कम्प्लीटली इनटू फिटनेस. मुझे एंजाइटी नहीं हुई, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. आई विल नॉट से कि नहीं हुई, बट बहुत ज्यादा नहीं हुई, बिकॉज पीपल न्यू मी दैट एंड दे हैड सीन माई जर्नी. So it was easy, and people trust me. Yeah. मैम, आपने इतनी पढ़ाई की अबाउट डाइट, अबाउट न्यूट्रिशन, एंड आप खुद भी एक फैट लॉस जर्नी में रहे हो. एंड इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज फैट लॉस. एंड आपकी जो जर्नी रही है ना फ्रॉम 2017 टू 2024, आई एम अज्यूमिंग कि आपने बहुत सारे लोगों का हेल्प किया होगा टू बी फ्रॉम फैट टू फिट. तो आपकी जर्नी में एंड जो आपकी नॉलेज है एंड इंडिया में जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है अबाउट फैट लॉस, आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंडियंस है वो क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन में? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक जब हम डाइट की बात करते हैं, वी आर and I think some people take it as like a sarcasm, but we as Indian and Asians, we are mostly deficit on proteins. All right. प्रोटीन सिर्फ उन्हें नहीं खाना होता जो जिम जाते हैं या टिपिकली जिन्हें बॉडी बनानी होती है. बॉडी बनानी भी बहुत डिफिकल्ट है. तो अगर कोई विमेन और एनी मेल हु से मुझे प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मुझे कौन सी बॉडी बनानी है, तो बॉडी तो आपकी है, राइट. आपको उसे एक प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स क्रिएट करना है आपके बॉडी का, जिससे आपको स्ट्रेंथ हो. स्ट्रेंथ वाई, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ मूव कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ये नहीं होना चाहिए मैंने हाथ मूव किया और मेरे यहाँ पे शोल्डर में पेन हो गया. मैं बैठी हूँ, मैं कमर में दर्द हो गया है, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे चक्कर आ गया है, या मैं काम करके आई, मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है, या मैं अपना सामान खुद नहीं लेकर आ सकती, मुझे I need my husband, or anyone else to pick up my own thing. मुझे मेरे बच्चों को उठाने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मेरे हाथ, मेरे पैरों में उतना स्ट्रेंथ, उतना दम होना चाहिए कि मैं अपना काम खुद से कर सकूं. And I think that is where I say it is about independent women. We are not talking about finances right now. So the mistakes that people do is, one, we underestimate the protein. Second, we feel कि अगर हम दाल खा रहे हैं, लेंटिल प्राइमरली, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन इट इज नॉट अ प्रोटीन डोमिनेंट फूड आइटम. अगर आप किसी भी फूड आइटम का न्यूट्रिशन लेबल चेक करेंगे, हर फूड आइटम में पीछे न्यूट्रिशन लेबल लिखा होता है, जिसमें पर 100 ग्राम्स लिखा होता है कि उसमें कितने फैट्स हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं. So my advice to such people or everyone will be, अगर आप कोई फूड आइटम खरीद रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ये खा लूंगी, इसमें बहुत प्रोटीन है, तो प्लीज उसके पीछे पढ़ें कि वो प्रोटीन डोमिनेंट है या कार्ब डोमिनेंट है या फैट डोमिनेंट है. दूसरी चीज, पीपल थिंक कि हमने नट्स खा लिए हैं, बादाम में भी तो प्रोटीन होता है. हर फूड आइटम में प्रोटीन होता है, पर कितना है एंड वो प्रोटीन डोमिनेंट है क्या? बादाम, cashews, walnuts, peanuts, these are all fat dominant. So are you actually eating protein for protein, or you are eating fats, in the ignorance of
thinking that you're eating protein, right? Those are the important things. So I would say lentil is overrated. I would say nuts are overrated. Milk products are overrated because we don't get, like proper milk products as probably we would get before. So know that, if you're lactose intolerant, there's a problem, right? So दूध पीना है क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है. प्लीज उसके डब्बे के पीछे पढ़ें कि उसमें एक्चुअली प्रोटीन है या नहीं है. इट्स एनिमल सोर्स ऑफ अ फूड आइटम. अगर आप अवॉइड करते हैं तो उससे थोड़ी सी ब्लोटिंग बॉडी में कम होती है. आई थिंक दैट इज व्हाई वी से दैट लैक्टोज creates a lot of bloating in the body. I'm not saying eradicate it. I'm just saying that have everything in moderation. Those are the three things. And then know that diet is not about bhooke rehna. Diet is not about soup salad khana. डाइट इज नॉट अबाउट बोलना कि अब तो मैं 3 महीने डाइट पे हूँ, आज तो मैं वो खा लेती हूँ, ये खा लेता हूँ जो मैंने अगले 3 महीने नहीं खाना है. सो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हटा के हमें एक लाइफस्टाइल में चेंज लाना है जिसमें हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बनाएं जो आपकी सब्जी, दाल, रोटी, ब्रेड्स, चाय, कॉफी. If you're a vegetarian, then you can add tofu, you can add paneer, you can have nuts also in moderation. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, because it's a lean meat. Goat is never a lean meat, so I would say refrain. But once in a while you can consume it. Prawns, squid, eggs are a wonderful source of protein. और अगर आप अपना प्रोटीन खा नहीं सकते हैं तो आप प्रोटीन पी सकते हैं. इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप वे प्रोटीन पी लें. अगेन उस डब्बे के पीछे पढ़ें कि उसमें शुगर कितना है, वो प्रोटीन डोमिनेंट है या वो कार्ब्स डोमिनेंट है, कार्ब्स में भी शुगर है क्या उसमें. सो दोज आर द थिंग्स. आई थिंक दैट्स एन अवेयरनेस दैट नीड्स टू बी देयर. ये खाना है. जैसे हम कार चलाते हैं, कार हम कभी भी रिजर्व में नहीं चलाते, सिंपल, करेक्ट. हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें हवा पूरी होनी चाहिए तभी साइकिल अच्छे से चलेगी. अगर आप कार चला रहे हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल पूरा होना चाहिए, then only the mileage will be good. Our body is the same. If whatever you're eating is not in proportion, is then we all face issues with recovery, pains, and medical illness as well. Like people get PCOD, people get thyroid, people get pre-diabetic conditions nowadays, diabetes. This is all a lifestyle disorder, which is what happens. मैम, सो अभी आपने बहुत सारी फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया कि जो हमें वेज में खाने चाहिए, नॉन वेज में खाने चाहिए. सो आई विल ब्रेक इट डाउन ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो भी नोट डाउन कर सके. सो मैम, वेज में आपने बताया लेंटिल्स, टोफू, पनीर, नट्स. एंड नॉनवेज में आपने बताया है एग्स, चिकन एंड प्रॉन्स. सो आई एम अज्यूमिंग कि एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है दोनों ही कैटेगरी में, वेज एंड नॉन वेज में. बट मैम, अभी मैं वेजिटेरियंस की बात करूं तो जो पनीर होता है वो बन के आता है मिल्क से. एंड जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए क्या अलग या क्या डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा? जैसे कि मैंने पनीर ट्राई किया है बट वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो फिर हमने और क्या और प्रोडक्ट्स या क्या और फूड इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए जो हमको प्रोटीन दे? Very, very beautiful question, Madhav. So, lactose intolerant. Again, like I said, पनीर सूट नहीं करता. जैसे आपने बोला, आपको या तो indigestion होगा, constipation होता है जनरली लोगों को. इस केस में, and again, you coming from the Marwari family and so am I, हम लोग जनरली रोटी खाते हैं. तो हमको, like I said, you can add soya chunks, okay, as a part of the protein, and you can have whey protein as well. If you're absolute intolerance toward lactose, you can have not the like what do I say, like a concentrate whey protein. You can go for isolate whey protein, or nowadays you have plant protein as well, which is what you can consume. So yes, those are the things that you can take care of. सोया को आप कैसे भी बना सकते हो, आप पुलाव बना सकते हो, आप उसकी टिक्की बना सकते हो, आप चपातीस बना सकते हो, because we eat chapatis, right? Even I'm from a Marwari family, so we eat chapatis. उसकी आप थेपले बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं.
तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ या मैं डाइट में हूँ. So you can still add proteins as a vegetarian. मैम, सो अभी आपने रोटी एंड राइस की बात की, बट एक लंबे अरसे से रोटी एंड राइस के ऊपर बहुत डिबेट चल रहा है. जैसे मेरे घर में एग्जांपल है, मेरे डैड, आप उनको डाइट देते हो एंड उन्होंने पिछले 5 साल से रोटी का एक कौवा नहीं खाया है. तो ये क्या डिबेट है, क्यों लोग राइस पे शिफ्ट हो रहे हैं? आप थोड़ा इसके बारे में समझाओगे प्लीज? Right. So number one, nutritionally, roti and rice is the same nutrition. Okay. अगर मैं इतना आटा और इतना चावल लेती हूँ, एक मुट्ठी, this will flatten into a chapati and this will be more in volume as rice. तो अगर ये पतली चपाती बनती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, उसमें 3-4 चपाती एंड उतना सारा राइस. What will be more, मानव? Rice will be more, right? Number one. Number two, आजकल जो चपातीज बनती हैं, जो आटा यूज करते हैं, lot of people are gluten intolerant, you know, because ऐसा तो होता नहीं है कि हम गेहूं लाएं, हम वो गेहूं का आटा पिसाएं और फिर हम यूज करें. हम तो जो पैक्ड आता है उसे यूज करते हैं. So I think the quality of food items that we are getting is also something that we need to look at. अगर आप चपाती खानी है तो आप जवार, नाचनी, ओट्स ये सब यूज करेंगे तो आपका डाइजेशन बेटर होगा. Most of the people are gluten intolerant, including me. I have IBS, and when I came from Jaipur, you know, I would not eat chapati and I would not sleep. लगता है कि खाना ही नहीं खाया है. But now, if you see, you know, my IBS is better because I inculcate eating rice, normal rice, brown rice, white rice, black rice, green rice is all fat. Okay, जो भी आप राइस खाते हैं every day, जो आपका कल्चर है, आप वही राइस खाइए. केरला में लोग रेड राइस खाते हैं तो उनको वो सूट करते हैं, राइट? बिकॉज इट्स मोर इट्स एक्चुअली पुट अप देयर, लाइक केरला में बनता ही वो राइस है तो उन लोगों को वो आदत है खाने की. बट राइस एंड रोटी का इट्स मोस्टली जस्ट अ ग्लूटेन थिंग. दैट्स इट. अदरवाइज टेक्निकली यू कैन ईट एनीथिंग, it's fine. And people who are more higher in their activity, for example, your dad, he's an Ironman. Right. I don't know how many times he's done Ironman. Insanely amazing guy. Like, hats off to his dedication is what I would always say. So because he's been into higher level of activity, he needs more food. So yet we need to calculate the amount of calories that he's consuming. And we need to take care of his digestion as well. He should not be bloated on the next day because he still have a higher activity to perform. So it's just the gluten intolerance if some people have. Otherwise, technically, you can eat anything. मैम, सो अभी रोटी और राइस की बात हो गई, तो रोटी एंड राइस का जैसे आपने बताया कि वॉल्यूम पे डिपेंड होता है. अगर हम राइस ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम हमको ज्यादा मिलता है तो ऐसा लगता है कि पेट ज्यादा फुल हो गया. बट अगर हम इंडिया में देखें तो लोग मस्त टूस के खा रहे हैं, एकदम 3 रोटी कोई खा रहा है, उसके साथ चावल भी खा रहा है. तो मैम, इससे मेरे को है ना, मेरी नाना जी की एक बात याद आती है. सो ही 75, वो सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, वो 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, 5 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, फिर स्विमिंग करने जाते हैं. ये उनका रोज का रूटीन है. एंड वो एक चीज क्या बोलते हैं, मैं अपना जो मील्स है ना उसको सिर्फ 80% तक खाता हूँ, बिकॉज हर 4 घंटे में कुछ क्रेविंग होती है कुछ खाने की. तो वो 80% तक ब्रेकफास्ट करता है, फिर 4 घंटे के बाद कुछ खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर 80% ही लंच करेंगे, फिर 4 घंटे के बाद कुछ खाएंगे. तो मैम, क्या ये चीज अच्छी है? So taking the same example, पहली बात तो अगर आपके नाना जी 5:30 उठते हैं तो आई एम श्योर वो सोते भी जल्दी होंगे, राइट? उनका एंड ऑफ कोर्स यू नो उन्होंने प्रॉपर घी न्यूट्रिशन अपने जमाने में खाया है, इसलिए वो उतना स्ट्रांग है. आई एट द एज ऑफ 44 फील मैं उतना भी पहुंच जाऊं तो गनीमत है. आई एम श्योर मेरे से जो छोटे लोग हैं एज में वो सोचते हैं कि हम 40 तक पहुंच जाए तो गनीमत है, राइट? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स दैट वी आर गेटिंग. नंबर 1, your grandfather is very active, which is wonderful. Hence, he's feeling hungry every 2 hours. So I feel hungry every 2 hours. There are some people who do not feel hungry for
the first half of the day and they want to eat in the later half of the day. जो आजकल एक फैट बन गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, है ना. 60% का खाना है because हमें समझ में ही नहीं आता कि हम when are we filled completely. So we need to have a plate, right? So there's no calculation in our stomach saying, there's an alarm saying 60% हो गया है, right? Again, you need to understand कि आपके जब प्लेट आप बनाते हैं उसमें 4 सेक्शन होने चाहिए. एक कार्ब्स, एक प्रोटीन, फैट एंड फाइबर. फाइबर अलग से इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि हम लोग जनरली वेजिटेबल्स मिस करते हैं. फैट कम्स फ्रॉम घी, ऑयल, मेजरली जिससे हम खाना बनाते हैं, वो सारी चीजों से फैट्स मेजरली एक प्लेट की जब हम बात करते हैं तो वहां से आता है. So when he says every 2 hours I need to eat, because he's eating 60% and not 200%. So there are some people. So is it good or bad? It is very very individualistic. Saying that number one, उनके पास में टाइम कितना है, उनके पास में फूड का एक्सेस कितना है, प्रेप करने का कितना टाइम है, उनका रूटीन कैसा है पूरे दिन भर में. So for example, if we both are talking, or if I go to office, or if you go to office, if we start eating every 2 hours, our bosses will be like, क्या कर रहे हो, है ना. बट अगर हम घर पे होते हैं तो हम हर 2 घंटे में खा सकते हैं. इन अ नटशेल, हम पूरे दिन भर में कितना खाना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. कितना खाना खा रहे हैं डिपेंड्स ऑन हमारा एक्टिविटी लेवल कितना है. सिडेंट्री है, या हम एक्सरसाइज करते हैं, या हम योगा करते हैं. एक्सरसाइज हम किस टाइप का करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डू वेट ट्रेनिंग, आई गो फॉर साइकिलिंग, आई वॉक. For example, you go for swimming, you do strength training. For example, Hemant is an Ironman, so he does strength, endurance, and cycling, everything together. For example, your grandfather, he has a different set of this thing. So, सबका कितना खाना है will differ, right? Because हम लोग की activity अलग है. That is what makes a difference. So there's no set rule. Every 2 hours, or intermittent fasting, or keto, or low carb or high carb. It depends on how are you as an individual. Number one, what are your eating pattern? Number two, how is your gut? Is it your gut friendly? Intermittent fasting से generally लोगों को long term में acidity होती है. And number four, which is very important, is that if you are munching mindlessly every 2 hours, then you need to understand and again redo your diet. And last but not the least, I would always say, do not underestimate hydration, because हम पानी पीना भूल जाते हैं और उसके consequences में people have innumerable tea and coffee thinking fatigue हो रहा है. It's not the fatigue, it's actually your electrolyte imbalance that happens during that time. सो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कार्ब्स इतने होने चाहिए, प्रोटीन ये होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए. बट मैम, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट के बारे में रिसर्च किया है, एंड जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे ये समझ में आता है कि जो फाइबर होता है अगर हम खाने के पहले खाते हैं, सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर डाइजेशन. सो ये मैम क्या सही बात है? Well, it just gives you a feeling of more satiety and fullness. Okay. You can have a glass of water as well before sitting for your meals. Okay. It will just make you feel more fuller, and then you will not eat. A person will not eat mindless, because उतनी भूख लगी होती है, हम खाना chew भी नहीं करते हैं generally, right? If you've seen a lot of people are sitting with their, just taking this as an example, with their cell phone, पता ही नहीं है कि खाना कितना जा रहा है, right? So those are the other things that makes a difference. कि ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि खाने का कलर क्या है. स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें फोन दे देते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या खाना खा रहे हैं. ये उनकी हैबिट बन जाती है. तो आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये प्लेट में रोटी है, राइस है, कलर क्या है फूड का. एटलीस्ट उतनी अवेयरनेस हमें कंटिन्यू रखनी है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, eating a cucumber or a plate full of salad improves your digestion? The answer is yes.
but it also creates a sense of fullness, and then you will eat aram se. Matlab, you will not gulp your food, you will chew your food and then eat mindful. Those are the important things. मैम, सो अभी गोइंग फॉरवर्ड हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक पर्सन है, उसका वेट है 90 kgs एंड ही वांट्स टू गो डाउन टू 80 kgs. सो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो हम उसे कैसा एक डाइट अगर आप बना सकते हो या बता सकते हो जिसमें उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो एंड फैट लॉस हो. सो वेट जब हम बात करते हैं मानव, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन दैट पीपल हैव कि मेरा वेट इतना है, मेरा फैट भी कम हो जाए, मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, क्या कोई अगले 1 महीने में करना है, 3 महीने में करना है? That's the other question. So X amounts of weight 90 तक आने में 1 महीना तो नहीं लगा होगा, 3 महीने में नहीं लगे होंगे, राइट? आई थिंक इट हैज टेकन टाइम. वो टेकन टाइम में क्या ठीक नहीं हुआ है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं हुआ है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं मैटर किया होगा, तभी आपका वो लाइफस्टाइल बिगड़ा है, राइट? सो व्हेन वी से वेट लॉस करना है, वेट इज एन एडिशन ऑफ फैट, मसल एंड वाटर. सो फैट लॉस करने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, which has to be a deficit. Again, the deficit comes with whatever is that person's eating lifestyle, and it should not be a bigger deficit because we need to gain strength as well, and it has to be sustainable. So it has to come with a proper calorie deficit. The deficit again is calculated based on various parameters. Strength भी बढ़ाना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी जो जरूरी है. अब आप वो जिम जाएं, घर पे करें, कैलिस्थेनिक्स कर लें, पावर योगा कर लें, आपके बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर लें. जिम जाना जरूरी है क्या? द आंसर इज यस एंड नो बोथ. जिम जाके एक एनवायरनमेंट बनता है. फॉर एग्जाम्पल हमें स्टूडियो में है, आपके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम रिकॉर्डिंग करें. सिमिलरली व्हेन अ पर्सन गोज टू द जिम, देयर आर प्रॉपर इक्विपमेंट्स, वहां का माहौल वैसा होता है. I mean, you feel motivated as well. You wear different clothes, you go for exercise. So you need to have a proper calorie deficit diet. You need to exercise. You need to ensure that you manage and see your progress periodically, ताकि आपको specified time duration में अपनी insights पता चल सके. मैंने 1 हफ्ते में कितना weight lose किया, दूसरे हफ्ते में कितना किया, तीसरे हफ्ते में कितना किया. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या मेरी नींद प्रॉपर नहीं थी? क्या मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था? Was I constipated or did I have diarrhea? Did I have social obligations? Social obligations and social pressures are different, Manav. So those are the things that a person needs to take care. So it's not about just 10 kgs. There's a lot that needs to be worked upon. सो मैम, अभी आपने जैसे बोला कि 90 to 80 kgs जाना 1 महीने का काम नहीं है. वैसे मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. आई वाज अराउंड 125 kgs एंड मेरे को उसको कम करने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 years to 3 years लगे हैं एंड आज मैं 93 kgs पे हूँ. तो ये इतना कम करने के लिए मेरे को 3 साल लगे एंड लोग बोलते हैं यार लोग 6 महीने में कर रहे, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? बट मैम, वो लोग ये चीज नहीं समझते कि जल्दी वेट लॉस करेंगे ना तो बहुत जल्दी अपना फैट वापस आएगा. तो अब कैसा है मेरे साथ कि पिछले 2 महीने से मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ, मेरा वेट उधर के उधर ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि डाइट नहीं करने की वजह से बॉडी पे फैट चढ़ रहा है एंड उसके वजह से ना लोगों को लगता है कि यार क्या है, इतना टाइम लग रहा है. बट आई थिंक वेट इज जस्ट अ नंबर. अगर आप 90 kgs पे भी हो, अब अगर अच्छे दिख रहा है, आपके मसल्स दिख रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग. Absolutely, weight is just a number. So giving you a very personal example, when I did my bodybuilding competition in Goa in 2022, I was weighing around 50.1. I could never touch below 50, Manav. Strange, right? I was 50.1. Okay. And this year, when I competed in Goa, I was 53.5. I never went down below 53. So I was up by almost 4.5 kgs, right? But that 4.5 kgs
was not fat. It was muscle. Now then the question from the others could be, तो आपने 2 साल में 4.5 किलो मसल बना ली? The answer is, मेरा लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतना है, वो भी बड़ा है. जहां पे मैं बेंच प्रेस 15 kg से नहीं होता था, now I do with 30 kgs, right? I have been a winner in a powerlifting competition as well, wherein I have lifted 57.5 kgs, which is more than my body weight. You know, it's been a history in bodybuilding, the powerlifting, wherein this guy said, this is insane, you know, because you look small in frame. Weight कम है लेकिन मसल ज्यादा है. So जैसे मैंने आपको बोला मानव कि जब हम वेट की बात करते हैं उसमें फैट भी आता है, मसल भी आता है, वाटर भी आता है. इसलिए लोग वाटर मैनिपुलेट करते हैं. आपने बहुत सारे एशियन गेम्स का भी जैसे आई वुडंट नेम व्हाट हैज हैपेंड, बट देन सुना होगा कि वेट मैनिपुलेशन करते हैं. तो वाटर वेट मैनिपुलेट करते हैं, तो वो तो हमें करना ही नहीं है ऑन average day-to-day life. We need to work upon your muscle and the fat. So जब हम muscle gain होता है, हमें exercise करने की need है. Fat loss करने के लिए you need to be on a proper diet. You have come a long way, Manav, because you did not go 120, 90, 130, 90, 150, 90. You know what I mean? Right. Because आपने बहुत बड़ा deficit कभी create नहीं किया. You were eating balanced meals. You never had a bad food relationship. धीरे कम हो रहा है, but sustainable है. वो नहीं है जहां पे हम जनरली सुनते हैं. ये जो कहानियां हैं ना, लोग बताते भी नहीं, क्योंकि सोशल प्रेशर आता है. आप बहुत सारे आजकल, अगेन आई विल नॉट से द नेम, जो पाउडर डाइट्स हैं, राइट? लोग शेक्स पी के वेट कम कर लेते हैं. फिर उसके बाद में जो वो शेक बंद हो गया, पहली बात तो 3 गुना 10 गुना एक्सपेंसिव है. दूसरा, मैंने प्रॉपर खाना नहीं खाया है, लेकिन जब मैं प्रॉपर खाना खाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे रुकना है. आई कैन ईट दिस, आई कैन ईट दैट, दिस एवरीथिंग. आपका भी खाना, उसका भी खाना, सबका खाना. तो मैंने सबका ही खाना खा लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि खाने का टेस्ट क्या होता है. मुझे तो सिर्फ वो शेक पीने की आदत थी. That is where your relationships are very important. चाहे वो आपकी खुद के साथ में हो, आपके खाने के साथ में हो, चाहे वो आपके फैमिली के साथ में. Those are the things which is important. So good job, Manav. And in the last 2 years, you know, I have seen you evolve. Trust me. Yes. You know, so not only to your fitness, but I think you know, I see that Manav is more matured. He has evolved. You know, you take courage and accountability to exercise, you know, to eat mindful. And that is what fitness is. Beyond that scale that we talk about. So मैम, अभी फैट लॉस के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो गई. आपने बोला था कि आपने पावर लिफ्टिंग की है, एंड बीइंग अ फीमेल आपने क्या क्या प्रेशर हैंडल किया, बिकॉज इंडियन सोसाइटी एंड गोइंग इनटू अ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, स्टेज पे जाके पोज करना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो एंड उन चीजों को आपने कैसे हैंडल किया? सोसाइटी प्रेशर तो मैंने तब फेस किया था जब मैं ऑलमोस्ट 100 किलो की हो गई थी. प्रेशर हम उसे बोलते हैं. तो आप कपड़े पहने चाहे से ना पहने, लोग तो जज करेंगे आपको. somebody had told me 3XL क्लोथ्स उनके दुकान में थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो कपड़ा लेके बनवा ही लो अपना मेजरमेंट का, क्योंकि 3XL भी नहीं आ रहा है. एंड देन ही हैड लाफ्ड, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट. तो जजमेंट तो वहां पे भी था, मानव, राइट? जजमेंट तो यहाँ पे भी था, wherein you know, you get married and then people still judge you because you know your partner looks more better than you. So judgment तो हमें वहां पे भी होता है. I think so people will judge you no matter what, in your bads and goods both. But people will not be there when you're in the hospital. You know, when you're alone, because nobody will be there forever in your life, right? So my turning point came wherein, I mean, I have a single parent and I can't take him every time I would have gone to the hospital. You know, and I've come crying back home saying that, oh, I was alone. The answer is, this is how life is. We came alone, we're going to go alone. Whatever we are doing, we need to just enjoy that process.
सदगुरु बोलते हैं ना कि हम आए भी अकेले थे, हमने जाना भी अकेले। अभी बीच में जो है, चाहे वो दुख है या सुख है, ये this you need to enjoy that process. So judge, people will do come what may, right? So when I wanted to do bodybuilding, I think छोटे कपड़े पहनना या बिकिनी पहनना या one piece dress पहनना, I think once you attain that body weight, that body aesthetics, your body is sculpted so beautifully that it is beyond showing off the skin. You know, it's about embracing that body aesthetics that you've made with so much of hard work. And we are all evolving. So people, you know, may feel, some part of the world will feel like this part of the world will feel that, oh, इसने बिकिनी पहना है. But at the same time, you know, people who are judging you also feels, यार काश मैं भी ऐसे कर पाती, है ना? Because everybody has aspirations. कहीं पे, you know, your heart always feels, you know, I want to look pretty and beautiful. At the other side, you know, people will always help you, guide you, say that, you know, colors are beautiful. But yes, it is not dirty. It is very beautiful. Posing on the stage is about, you know, showing off your hard work, the muscle definition that you have built. So you need to again put a demarcation of the people, like I say, set your boundaries. The people who guide you, be with them. The people who judge you, the people who talk negative, I think you can just put them aside, because over a period of time when you win, ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं because उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ वहाँ पे बिकिनी पहन के पोज करना is not the only thing. उसके पीछे जो हार्ड वर्क है, that is something which is more exceptional. मैम बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, एंड आप जब आपकी स्टोरी भी बता रहे थे ना, आप थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, वो आपकी आवाज से समझ में आ रहा था ना, आपकी आंखों में भी वो चीज दिख रही थी. मैम गोइंग फॉरवर्ड, जैसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, मतलब प्रोटीन लगता है, ट्रेनर लगता है, अलग काइंड ऑफ ट्रेनिंग लगती है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की फीस भरनी पड़ती है. सो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में किसी को जाना है तो एक अंदाजन कितना खर्चा हो जाता है? Well, आप बहुत expensive, like I said, diet, you can choose the food items accordingly. जरूरी नहीं है कि for example I'm a non-vegetarian, तो जरूरी नहीं है कि मैं salmon ही खाऊंगी because it's expensive. जरूरी नहीं है कि मैं you know, I will go for whey protein. If I can eat my food, it is better. So I generally would have egg whites. You know, I will have normal rice, normal sabziyan aap khao. It is not expensive. It is absolutely not expensive. So diet is fine. पानी, regular पानी पीना है. जब हम supplements की बात करते हैं, again in bodybuilding, आपको वो सप्लीमेंट्स लेने हैं अगर आपके बॉडी का जो ब्लड कॉम्पोजिशन है, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है. अगेन बी परफॉर्मेंस एनहांसर सप्लीमेंट्स, बिकॉज आपका कैलोरी डेफिसिट होता है, परफॉर्म आपको करना है, यू हैव टू लिफ्ट हैवी. सो यस, we do need those performance enhancers, which could be probably a glutamine or a BCAA, you know, majorly on these two things that I have taken. And of course, I do take creatine as well, which is not expensive. So that's on the diet. Gym, बहुत expensive gym की जरूरत नहीं है, आप normal gym में भी जाके कर सकते हो, है ना, वो important है. एक प्रॉपर टीचर का होना इम्पोर्टेंट है, कि आपको वो पोजिंग सिखाए, आपका एक माइंडफुलनेस प्रॉपर हो. यू नीड टू बी विद द राइट पीपल. तो ये तो बात हो गई हमारी ऑनगोइंग जर्नी की. देन वी टॉक अबाउट कि हमें कंपटीशन में जाना है, तो आपने कहाँ रहना है, आपने कंपटीशन की फीस भरनी है, बिकॉज फेडरेशंस अगेन फॉर ICN दे डू नॉट प्रमोट सप्लीमेंट्स, you know, so because the word in itself says I compete naturally. So naturally, which means is their own money that they put in for conducting these events, right? So it's not very expensive, but it involves money from the athletes, which means that you need to pay for sure.
right? And you need to have your proper heels and tan and makeup, which is for, I mean, if you ask me, it's fine, right? It is something that if you're going for some competition, utna to aapko kharcha karna hi padega. If you win, they do give the prize money as well to the winner. So I have received a cash prize when I won in Goa, and I have received the cash prize when I won in Dubai as well. And more than that, it gives you a platform wherein people trust you. And then there are a lot of more people who want to work with you as me as a coach, so that I can make a difference to their life as well. So it's all about, getting a return of the investments that you do. सोशल ऑब्लिगेशंस आपके बंद हो जाते हैं. जहां बाहर जाके आप कॉफी पे 500 रुपए खर्च कर देते है ना, बाहर जाके हम नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो 3,000 4,000 खर्च हो जाते हैं. मुझे लगता है कि अगर सब चीजों की हम मैथ्स लगाएं तो बैलेंस हो जाता है, और उसके साथ में व्हाट यू विन इज अ वेरी वेरी ग्रेट फिजिक एंड you evolve, as an athlete. जहां पे लोग पहले मुझे बोलते थे, उसकी मोटी बीवी. I think now people recognize me as, oh, are you an athlete? So that's the kind of investment that you do in yourself, and these are the platforms wherein you showcase your talent. So monetary wise, yes, it's an investment, but if I have to talk about ICN, they are fair to the amount of money that they charge from the athletes, because I've seen the other federations as well. Wherever you go, you got to pay. You got to absolutely pay. So if you have any of the sport that you'd like to go in, you have to pay. Yeah. मैम आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है, एंड पता नहीं मैं पॉडकास्ट में कितनी बार बोल रहा हूँ, बट बोलते जा रहा हूँ बिकॉज मैं खुद ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ. बिकॉज जो हमारी इंडियन वुमेन होती है ना, वो बहुत सारी चीजों के थ्रू जाती है. उनको फैमिली का ध्यान रखना है, उनको अपना करियर बनाना है, एंड सबको साथ लेके चलना है. वेस्टर्न कल्चर जैसा नहीं है कि हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है. एंड वो खुद के बारे में सोचता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे सबको साथ लेके जाना है. सो मैम, इंडियन वुमेन जो होती है ना, वो स्पेशली अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखती कि क्या खाना चाहिए. वो कभी भी कुछ भी खाते हैं. सो आप ऐसा कुछ बता सकते हो जो स्पेशली इंडियन वुमेन को खाना चाहिए, बिकॉज दे गो थ्रू अ लॉट. सो मानव, व्हेन वी से दैट हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम मूव तो कर रहे हैं, है ना. मैं बैठी भी हूँ, मैं चल के भी जाऊंगी, तो ये नहीं होना चाहिए जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से प्रॉब्ली आधा किलोमीटर गई और बेहोश होके गिर गई. ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर सकती. ये नहीं होना चाहिए कि मैं आई नीड 4 पीपल मेरा लैपटॉप बैग उठाने के लिए या कुछ और करने के लिए. सो दैट इज वेयर द स्ट्रेंथ as in a person will come. Indian women, the way we've been brought up is to take care of others more than their own self. I think we mentally feel obligated, and I would use that word, obligated, कि पहले मैं बाकियों को अच्छा अच्छा खाना दे दूं और जो बचा कुचा होगा वो मैं खा लूंगी, right? So please do not think that you are a garbage bin. Okay, you're as important as the other people, because अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बाकियों को फीड कर पाएंगे. तो you are the main pillar of the house, and then you'll be able to give to the other people. So अगर बात आती है न्यूट्रिशन की, like I said before, they also need to have proper breakfast, proper lunch, proper dinner, and a healthy snack, which is important as well, because जो शाम के 4 या 5 बजे की भूख होती है, वहां पे हम हमारा डब्बा नहीं लेके जाते हैं, या हम प्रॉपर मील प्लान नहीं करते हैं. That's why most of the people go and probably have some unhealthy food, which is more than unhealthy, I would say it's unplanned, and then we don't know how much we're eating. So that is important. Women, irrespective of going to the gym or not, needs to have protein. It's important, especially after their 30s, because the muscle mass tends to go down as we progress. People get osteoarthritis. Then after 40s,
people, especially women, premenopause starts, then the menopause starts. So all of that leads to osteoarthritis later. Right. So that can only be taken care of if your nutrition is tight, if you're exercising. You don't need to go to the gym. आप घर में भी exercise कर सकते हैं. And I think COVID was very kind enough to teach कि हम घर के 4 दीवारों के बीच में भी exercise कर सकते हैं. बाहर जाके fancy करने की जरूरत नहीं है अगर आप uncomfortable हैं तो. So it is okay. Please, 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 to all these lovely ladies here, take care of your nutrition. You have to be strong to be able to lead an empowered life for your kids, for your partner, for your parents, for your family, and most important, for yourself. It's important. मैम, सो जो इंडियन वुमेन होती है ना, वो अपने लाइफ में बहुत सारे अलग फेजेस पे थ्रू जाती है. जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया था. सो जो फर्स्ट फेज होता है, इट स्टार्ट्स विद मेनाज, दैट इज स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो सेकंड होता है, फिर आता है प्रेगनेंसी स्टेज, उसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग, एंड उसके बाद आता है मेनोपॉज. सो जब वो इतने अलग फेजेस के थ्रू जा रहे हैं एंड अलग चीजों के थ्रू जा रहे हैं, तो एक न्यूट्रिएंट तो उनको हेल्प नहीं करेगा. उनको अपने स्टेजेस के हिसाब से, अपने फेज के हिसाब से डाइट, न्यूट्रिशन बदलते रहना पड़ेगा. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो प्रेगनेंसी अभी आजकल नया चला है अगेन, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, आपने सुना होगा. So, and then there are post-pregnancy depression, postpartum depression as well. So these are the 3 things, 3 words that we would have seen, read, heard lately. So prenatal means that, again, because of the lifestyle imbalances, fertility rate has gone down, right? Because of which people go for all these extra things like IVF, IUI, and all the other things. The answer to all of this is the right nutrition and being active. That is how your hormones are going to be proper. During pregnancy, especially the first trimester, which is there, because people have digestion issues, they don't feel good. I think those are the times when the nutrition may not be that proper. But in the second and the third trimester, it is important. Understand that a woman is giving birth to another life. Right. So whatever you will feed in your body, your child will be developed accordingly, whether it's the feeding of the food or the emotions as well. तो एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड अगेन मैं आपको वही बात वापस से रिपीट करूंगी कि उसमें प्रोटीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जनरली हम सब्जी रोटी तो खा लेते हैं, सब्जी दाल रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन वो रोटी में हमने सोया चंक्स मिलाया है क्या? अगर सोया से प्रॉब्लम है तो आपने टोफू ऐड किया है क्या? पनीर ऐड किया है क्या? सिर्फ दाल 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 नहीं खानी है, आपने वे प्रोटीन पिया है क्या? डिलीवरी के बाद में पीपल से कि मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत है, राइट? एंड दैट इज व्हाई पीपल विल ईट अ लॉट ऑफ लड्डूस, राइट? वो घी वाले जो लड्डू होते हैं, कॉर्न के जो लड्डू से स्ट्रेंथ आती है. आजकल सिर्फ वो घी के लड्डुओं से काम नहीं चलता. We need to still have protein. अगर आप अब किसी gynecologist के पास में, if you've seen the women going, they would always say, अच्छा ठीक है, आप इसके साथ में प्रोटीन भी ऐड करो. लेकिन again, you have to turn around that box and see whether it is protein dominant or a carb dominant. So you need to have protein as well. And again, whatever you are eating, so right after the delivery, during the breastfeeding time period, you still need to have a protein. If not too much, which may lead to diarrhea of the child because the lady is breastfeeding, at least an optimal amount is required. It is absolutely safe, no problem. And then you can observe your children, your child gut health also, कि आपके उनके बच्चे को तो कुछ digestion का problem नहीं हो रहा है, and accordingly you can change. But it is important to add those kind of things. And once you take care of yourself, your baby, वो depression वाला phase भी नहीं होगा. Until and unless अगर कुछ किसी को delivery complications है, that's when they need to move as per their gynecologist suggestions. But if it is normal delivery, I would suggest people to start walking, start to do some stretchings in the guidance of a proper coach, start to do some bit of movement.
एंड आई वुड नॉट से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकॉज वो होता है कि मुझे जिम जाना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में. आप अपने घर पे स्क्वाट करिए, प्लैंक करिए, वॉल पुशअप्स करिए, स्ट्रेचिंग्स करिए, बेड में स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं. बच्चे को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वहीं से ही उसकी परवरिश शुरू हो गई है. मैम, सो जैसे आपने बताया कि प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट जो मैंने रिसर्च में पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 52% प्रेग्नेंट वुमेन हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया, मतलब ब्लड में आयरन की कमी. तो डू यू थिंक वुमेन्स को उन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट एक वुमेन ने अपने डाइट में लाना चाहिए? So iron, fruits and vegetables. Okay. That's one of the best things. Okay. Because iron is a micronutrient, right? It's not a macronutrient. Okay. And iron is majorly present in, like I said, fruits and vegetables. But depends upon how much are they deficit on iron. Is something that they need to tackle accordingly. अगर हम everyday basis में proper intake करते हैं खाने का, it is fine. But अगर किसी को ज़्यादा deficiency है, so then they need to add supplement pertaining to iron requirements, and not a multivitamin, because multivitamin, the word says it's got a portion of multiple vitamins. So अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम का सप्लीमेंट लें, अगर किसी का विटामिन डी कम है तो वो विटामिन डी का सप्लीमेंट लें. ये सब चीजें मल्टीविटामिन में नहीं आएंगी. सो अगेन वो सप्लीमेंट है, वो दवाई नहीं है. तो आप दवाई नहीं ले रहे हैं, आप अपने सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, सो दैट यू आर नॉट ऑन डेफिसिट. सेम इज विद विटामिन डी एंड B12, मानव. सो यस, वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर ईटिंग राइट. वेजिटेबल्स ही नहीं खाते हैं लोग, है ना. फ्रूट अगर बोलते हैं कि खाना है तो एक बनाना खा लिया. सो अगेन दोज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड ज्यादा डेफिशिएंसी इसलिए है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स व्हिच आर देयर इन how the crops are cultivated, they are taken care of, what is the supply of the quality of food items that we're getting. So that is also one of the factors. अगर कोई खा रहा है फिर भी anemic है तो आप supplements ले सकते हो. But again, it's in consultation with your doctor. So मैं अभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा बात हो गई है, बट एक चीज होती है कि जब कोई फिटनेस में आता है, या तो वो इंजरी की वजह से चालू करता है, किसी को बैक पेन होता है, या वो रीजंस की वजह से वो फिटनेस में आता है. सो आप उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे? जब हम पैदा होते हैं, we're in the womb of our mother. It's nothing but a water bag, right? And a child is moving in that water bag. अगर आपने अब्रॉड में देखा होगा, when a child is born and within a few months they send their kids for swimming. We are natural swimmers. It's majorly in India when we very scared about कि हम छोटे बच्चे को स्विमिंग के लिए भेजें या ना भेजें, राइट. हम उन्हें अपना खुद का काम करने दें या ना दें. So that is important. So I think बचपन से अगर हमें वो सिखाया जाए कि हमें मूव करना इम्पोर्टेंट है, and I'm saying मूव करना इम्पोर्टेंट है, I think that is needed. That is a mandate for every parent to know that their children needs to move. Number one. Number two, हम स्टार्ट क्यों करते हैं? अगर आप आजकल की जनरेशन देखें, so we are sitting on mobile phones most of the time. मूवमेंट ही नहीं है. मूवमेंट नहीं है इसीलिए बच्चे नीचे ही नहीं बैठ पाते हैं जमीन पे. हाउ टू वी से आलती पालती मार के बैठना है ना, ऐसे बच्चे ही नहीं बैठ पाते हैं आजकल इन अ क्रॉस लेगेड पोजीशन. तो उसके लिए उनको योगा क्लास में भेजना पड़ता है. व्हेन आई वुड टॉक अबाउट माय जनरेशन, आप सड़क पे खेल रहे हो, आप मूव कर रहे हो, आप वॉलीबॉल के लिए जा रहे हो, आप क्रिकेट के लिए जा रहे हो. सो आवर बॉडी इज इन द मूवमेंट. Why do people start fitness journey? हमने वो word fitness attach कर दिया है. Why? Because या तो किसी को कोई इंजरी हुआ होगा, right? या फिर कुछ mental health issues हैं जिसकी वजह से नींद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से gut health है, and वो mental illness की वजह से everything comes back onto the physical illness, right? And I'm going to tell you about the correlation.
or we want to, like I said, I want to change my profession from corporate to fitness industry. Those are the things that makes a difference. Now, your mental fitness and your physical fitness is absolutely correlated. People get PCOD majorly because of their lifestyle. वो एक्सरसाइज करना उन लोगों के लिए मैंडेट है, खाना प्रॉपर खाना मैंडेट है. सो मैम आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन एक चीज बताई कि मूव करना. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे मूव करना मतलब उनका हो गया इतना हो गया, चल मूव कर लिया मैंने, मेरा वर्कआउट हो गया. तो ऐसा नहीं है. मूव करना मतलब जाओ कार्डियो करो, थोड़ा भागो, वॉक करो. तो जो भी सुन रहा है, जो भी मेरा दोस्त है, प्लीज मूव करना मतलब ये मत बोलना कि मेरा पैर हिला दिया तो मेरा मूव हो गया. So man, now we are coming to the end of the podcast. तो एक थोड़ी सी फन चीज करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ सीखने में न्यूट्रिएंट्स के बारे में हो गया, लोगों को भी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है कि क्या खाना चाहिए, कैसे चीजें करनी चाहिए. सो लेट्स गेट टू अ फन पार्ट, दैट्स रैपिड फायर. सो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, आप बताओ आपको जो अच्छा लगे. So let's start. Yes. So you are into yoga also. You are into strength training. Yes. Also. So you have to choose between yoga or strength training. Don't kill me for yoga. Okay. One food you cannot live without. It's not a food, but it's chai and coffee, and I still have my coffee here. Okay. Favorite cheat meal? Breads. Okay. One word that defines your fitness philosophy. Do what you can without getting injured, in the right state of mind. Okay. Meditation, cardio, or heavyweight training for stress relief for you? Well, it's a combination. You can choose one. This is मेरे लिए gym है. So you said meditation, cardio, or heavyweight training. So let me rephrase this as I start with cardio, okay, strength train, cardio, and close it with meditation. Okay. Favorite workout song that gets you pumped up during gym? Strength training, and especially legs. Favorite workout song? Workout song? Yeah. I don't hear the music. I just hear my own breath. Oh. So if you ask me which song is playing, and I'm like, okay, are we playing any song? So yeah, I don't listen to music. Okay. One wellness trend you secretly love? I think yoga is underrated. Okay. Yeah. So if we can move our own body, body weight, I think we can do anything. So we don't have to really wait for a gym, or मेरे पास weights नहीं है, या मैं घूमने के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास dumbbells नहीं है या machine नहीं है तो मैं move नहीं कर सकती, and then we give excuses. So your body weight, whether you say it as calisthenics or yoga, आप कुछ भी उसे नाम दे दें, लेकिन करना तो आपने अपने body weight से जो wonders कर सकते हैं, that's the secret ingredient. मैम योगा सच्ची बहुत underrated है, because योगा में भी strength training होती है. Absolutely. So if you say again, so how do we perceive yoga as? If you do have shoulder strength, तो आप handstand कर पाओगे. अगर आपका core strength है, तो आप scorpio pose कर पाओगे. And push-ups and deep squats तो योगा में भी होते हैं. So yes, depends upon what is a person's definition for yoga. It's not just breathing. It is just not meditation. It's just not asanas. It's a combination of everything together. The hardest part of being a wellness coach? You need to coach the other people, while you are coaching or working on your own self as well. For example, I was under stress, during my competition. And I had not given away any of my client communication. So at times it becomes difficult to actually coach when you're yourself in a stress mode. So that is where we always say, it's like a give and take situation between a coach and a mentee both. But it's fine, it's part of life. Yeah. So this is the last question, ma'am. A celebrity who would you love to work and guide? जैसे मेरा है कि मेरे को जॉन अब्राहम के साथ एक वर्कआउट सेशन करना है, तो ऐसा कुछ आपका है? Well, there have been multiple phases, Manav. So, Made in India times, Milan Soman, and then it was Arjun Ampal. And then from the time I've seen the movie Commando,
I've definitely seen Vidyu Jamwal as one of the very, very strong guy, right? So if given an opportunity, I'd like to have a workout session along with. And we've all heard that he's a vegetarian, and I'm not really sure vegan, but definitely to work along with on his nutrition if given an opportunity. And I really look forward for it. Like, yes, same age, but he doesn't look his age, and nor do I. So yes, it'll be good to probably have one of the workout session and share the best practices. I'm talking about Gupta Jamal, sir. He is one of the best. Oh yes. Mind-body connection बहुत ही ज़्यादा strong, especially his reflexes. Yes. फिर हम उनके Instagram story पे देखते हैं कहीं forest में जा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी ice bath ले रहे हैं जाके. So his mind is very strong. And अगर आपको opportunity मिलेगी तो आप मेरे को भी मिला देना. Of course, Manav. Like I said, in all our conversations, fitness is not only about the physical health. If you see any of those celebrities also, जिन्होंने अपना उतना physique या fitness maintain किया हुआ है, सिर्फ वो exercise नहीं करते हैं, सिर्फ वो खाना नहीं खाते हैं, उनका recovery, mental and physical, दोनों उतना important होता है. So yes, fitness is a big thing, very, very overrated. It's simple. It's very, very simple. All that we need to do is understand those parameters. Okay, here, ma'am, we come to the end of the podcast. It was a very knowledgeable podcast, Thank you. And thank you for the opportunity. Thank you, Manav, for inviting me.